Assalamu alaikum, dear friends. Hope everyone is fine and welcome back to the Knowledge Intermission. Alright, dears, as you all know that we discussed the difference among sentence, clause, and phrase, and I also told you that these points will be discussed in detail. So, if you people have any problem in sentence description, kinds of sentence, and parts of sentence, visit our channel. There is a separate playlist for sentence description, parts of sentence, and kinds of sentence, and solve your problems by watching our videos. So now it's time to discuss clause and its types. Now, what is clause and what are the types of clause? So first, let's discuss this tree of clause. After that, we will discuss the definitions as well. Clause we have, so clause is divided into two types. One we have independent clause and one is dependent clause. You know the meanings of these words, that independent mean that which can stay alone and which can convey meaning, and dependent mean that which doesn't give us meaning and which depend on another clause, which depend on independent clause. And dependent clause is further divided into three types. The first one we have noun clause, adjective clause, and adverb clause. Now, what is clause? अब clause क्या है हमारे साथ? So the definition of clause is that a clause is a group of words that contains subject and predicate and gives complete or incomplete meaning. If you look at the definition of the clause, अगर आप इस clause की definition को देख लें, so we have three aspects in that or 3 points in that. The first one we have, हमारे साथ पहला जो point है वो है कि a group of words, यानी जो clause होगा वो group of words होगा. All right. Second point we have that contains subject and predicate, जिसमें हमारे साथ subject और predicate होंगे. All right. यानी group of words होंगे, subject और predicate उसमें मौजूद होंगे. And gives complete or incomplete meaning. और उसके बाद या तो हमें complete meaning देंगे और या incomplete meaning देंगे. All right. Now, अगर complete meaning देंगे, so that is called independent clause. उसको हम independent clause कहेंगे. और independent clause को हम जो है ना main clause भी कह सकते हैं. If a group of words that contains subject and predicate and gives us incomplete meaning, अगर अल्फाज का मजमुआ हो और उसमें हमारे साथ subject और predicate मौजूद हो और वो हमें incomplete meaning दे, that is called dependent clause. उसको हम dependent clause कहते हैं. Now, dependent clause cannot stay alone. Dependent clause जो है ना वो अकेले meaning नहीं दे सकता. Dependent clause depend on a dependent clause. Dependent clause की meaning complete करने के लिए आप लोगों को चाहिए कि दूसरा clause लगाना जो है ना वो जरूरी होगा. So, और dependent clause को हम जो है ना वो subordinate clause भी कह सकते हैं. Now, I have mentioned some of the examples. मैंने कुछ examples दी हुई हैं. Now you will understand better from these examples. Like the first example, we have that Ali performed the prayer. So let's apply these 3 points on these examples. ये जो 3 points हमने definition में mention की है, ये हम इस examples पर जो है apply करते हैं. So the first point we discussed here that a clause is a group of words. यानी clause जो है वो अल्फाज का मजमुआ होगा. So you can see that we have Ali performed the prayer. 4 words are here, यानी 4 अल्फाज हैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल में और ये अल्फाज का एक मजमुआ है. Alright. The second point we discussed that contains subject and predicate, जिसमें हमारे पास subject और predicate मौजूद हों. So if you look at here, we have that Ali is subject, right, and performed the prayer, that is the predicate. ये हमारे साथ predicate है. The next point we discussed that gives complete or incomplete meaning, यानी जो complete or incomplete meaning दे, that is called a clause. So अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे, Ali performed the prayer, यानी अली ने नमाज पढ़ा या नमाज पढ़ा था. It means that it gives us meaning, ये हमें complete meaning देता है. So I told you that a clause that gives us complete meaning, यानी वो clause जो हमें complete meaning दे, that is called independent clause. उसको हम क्या कहते हैं? Independent clause कहते हैं. So it means that this is called independent clause. इसको हम जो है ना independent clause कहते हैं. The next example we have that when I entered the room. So now if you look at here once again, when I entered the room, यानी जब मैं कमरे में दाखिल हो गया, it is also a group of words. ये भी अल्फाज का मजमुआ है. And second point we have that it also contains subject and predicate. इसमें भी subject और predicate मौजूद है.
बट इफ यू लुक इट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, दिस क्लॉज, अगर आप इस क्लॉज के मीनिंग को देख लें कि व्हेन आई एंटर्ड द रूम, यानी जब मैं कमरे में दाखिल हो गया, सो व्हाट इट मीन्स दैट मीनिंग इज नॉट कंप्लीट हियर। इसकी मीनिंग जो है ना ये कंप्लीट नहीं है। इफ यू वुड लाइक टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ दिस क्लॉज, अगर आपको इस क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट करनी है, यू वुड यूज इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर दैट। आपने इसके लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल दैट व्हेन आई एंटर्ड द डोर, व्हेन आई एंटर्ड द रूम, Ali was watching TV. Ali जो है ना वो TV देख रहा था। Alright. So if you look at here, when I entered the room, it means that this clause doesn't give us complete meaning. ये जो clause है हमें complete meaning नहीं देता। So मैं आपको बताया कि जो clause हमें complete meaning नहीं देता, यानी जो हमें incomplete meaning देता है, that is called dependent clause. उसको हम dependent clause कहते हैं या subordinate clause कहते हैं। Alright. The last example we have that even if I was sick, I went to school. Now it is whole is one complex sentence. एक complex sentence है हमारे पास, but there are two clauses. यहाँ पर हमारे साथ कितने clauses हैं? दो clauses हैं। आप फर्स्ट जो है ना हमारे पास है कि फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट और प्रिडिकेट, ये एक जो है ना क्लास हो गया। क्लास की पहचान ये है कि यानी जब आपके पास सब्जेक्ट और प्रिडिकेट की कम्बिनेशन हो, जितनी कम्बिनेशंस हो उतनी ही क्लासेस आपके साथ मौजूद होंगे। सो उसमें सब्जेक्ट और प्रिडिकेट का एक कम्बिनेशन हो गया, अब सब्जेक्ट और प्रिडिकेट का दूसरा कम्बिनेशन हो गया। सो इट मीन्स दैट वी हैव टू क्लासेस इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में, इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे साथ दो क्लासेस मौजूद हैं। ऑलराइट, द फर्स्ट वन दैट इवन इफ आई वाज सिक। Now let's identify that which one is dependent clause and which one is independent clause. कि कौन सा इसमें dependent clause है और कौन सा इसमें independent clause है। So we have that even if I was sick, हत्ता कि मैं बीमार था। So what? It means that the meaning of this clause is not complete. So if the meaning is incomplete, that is called dependent clause. इसको हम dependent clause कहते हैं। All right? It means that it is dependent clause, ये हमारे पास dependent clause। All right? And the next clause we have that I went to school. I went to school. मैं स्कूल गया था या मैं स्कूल गया। It means that it gives us complete meaning, या हमें complete meaning देता है। That is called independent clause. इसको हम independent clause कह सकते हैं। And the next point is that whenever you would like to use dependent clause at the start of the sentence, जब आपने dependent clause sentence के start में इस्तेमाल करना है, you would use comma at the middle. आपने comma जो है ना वो middle में इस्तेमाल करनी है। Alright, so it was all about the clause and types of clause, noun clause and adjective clause, adverb clause. These will be discussed in next videos. So hope you understood better and see you in the next video. Thank you.